Hi, welcome viewers. I hope you are hunky dory. Please turn on the caption so that you can understand what I'm speaking. If you want to read this complete information in English, you can read the blog post. Link given below in description. आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, क्या कनाडा में बगैर आइल्स के एडमिशन मिल जाता है, और अगर एडमिशन मिल जाता है तो क्या बगैर आइल्स के वीज़ा भी मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बाय द वे, मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो कंप्लीट बनाई हुई है और उसमें मैंने 3 तरीके बताए हैं जिसमें आप कनाडा में बगैर आइल्स के स्टडी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लिंक ऑफ द वीडियो। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने A to Z कंप्लीट 3 तरीके बताए हैं। सो ओके, इन दिस वीडियो आई एम गोना mention how you can study in Canada without IELTS. Is it possible or not to get visa in Canada, and which universities offer admission without IELTS? I will also show you top 8 universities that give admission without IELTS. So in this short video I'll mention complete details, so watch this video till the end. If you haven't subscribed my channel yet, please consider to subscribe it, because I always try my best to upload informative and beneficial videos for you. So let's get started. Here we go. Okay, so let's talk about what possibilities to study in Canada without IELTS. 2 possibilities हैं. First, if you studied English, and second, if you belong to the country where the English is being spoken. So पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में. If you have been studied in English in your previous or current program and you have to get English proficiency certificate from your institution. How to get English proficiency certificate for Canada? Getting English proficiency certificate for Canada is very easy for the international students. Universities in Canada are now offering 2 options to the international students, and one of them is called providing English proficiency certificate. If you have studied all subjects in English language in your past academic years, you can ask for certificate from your previous school or college and use it as language certificate. In short words, अगर आपने 12th या बैचलर्स इंग्लिश में स्टडी की है तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इंग्लिश का सर्टिफिकेट बनवा कर उसको एज अ प्रूफ आप सबमिट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में. नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इस सर्टिफिकेट पर एडमिशन हुए भी हैं या मैं ऐसे हवा में बातें कर रहा हूँ? यस, डेफिनेटली हुए हैं. मास्टर्स के कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था एंड आई हेल्प देम इन दिस जर्नी एंड दे गॉट एक्सेप्टेड. सो यस, यू कैन get admission as well. Second option, if you are from English speaking country, doesn't matter if you belong to any option, these top 8 universities for you guys. Now let me show you top 8 universities that give admission without IELTS. First one is University of Toronto. Just scroll down a little bit and read this second point. As you can see, you have completed or completing 4 or more years of full-time academic study in an English language school located in a country where the dominant language is English. Just click on the link and you can see you are from these countries. You can apply without IELTS. Some of my students ask me from these countries, so this is the answer for you guys. Second, Concordia University. As you can see, English language proficiency. Completion of a minimum of 3 full years of study at the undergraduate or graduate level at the accredited university, one of the following countries. Let me click, and these are the countries for IELTS waiver. Do not worry if you are not from these countries. Just read these. Who do not meet one of 3 conditions outlined above and whose primary language is not English will be required to provide proof of English proficiency score prior to their admission to Concordia University. In all cases, the university reserves the right to require an English language proficiency test if it is deemed necessary. यानी इसका मतलब है कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल से हैं और आपने स्टडी इंग्लिश में की है और आपको इंग्लिश आती है, तो आप सिंपली अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपने कॉलेज से लेकर अप्लाई कर सकते हो. बट योर यूनिवर्सिटी कैन टेक योर इंग्लिश टेस्ट एज वेल, सो बी प्रिपेयर गाइस.
third one is Carleton University. And read this point. Present official certificate transcripts that you have completed an undergraduate or graduate degree within the past 3 years at the university in the country in which primary language is English, where the language of instruction in the relevant educational institution was English. The language of instruction in their most recently completed undergraduate or graduate degree was English. So अगर आपने अपनी अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री इंग्लिश में कंप्लीट की है तो आप विदाउट आईएलटीएस अप्लाई कर सकते हैं. गॉट इट? लेट्स सी द फोर्थ वन, द यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग. स्क्रॉल डाउन करें एंड रीड दिस इंफॉर्मेशन. इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वेवियर ऑप्शंस. These are English exemption countries. Fifth one, the Brock University. These are the exemption countries. As you can see, if you scroll down, and it is clearly mentioned that अगर आपने अपनी स्टडी इंग्लिश में कंप्लीट की है तो आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं. All you just need English language proficiency letter जिसमें mentioned हो कि आपने स्टडी इंग्लिश में कंप्लीट की है. Number 6 is University of Waterloo. If you scroll down to the bottom, and you'll see ELP exemption country list. Also read this. You have completed 3 or more years of postgraduate education or completed a graduate degree at the university where the English is listed as the only language of instruction on the International Association Universities World Higher Education Database. Now choose your country from this map or drop down option and find your institution. If your country in the list, then you can apply without IELTS. Seventh one is University of Saskatchewan. Eligibility for exemption. Now same process, choose your country from this map or drop down option and find your institution. If your country in the list, then you can apply without IELTS. Number 8 and the last is University of Ottawa. Scroll down करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि countries and regions eligible for an English language test exemption. और यहाँ आप देख सकते हैं कि countries की list जिसमें Asian countries भी add हैं. And the good thing is for Pakistani students, Pakistani also added in this list, but you don't worry if your country is not in the list. You can just click below option which is other possibilities of exemption. Here you can see especially for Indians passing the CBSE or CISCE senior English subject with the final grade of 75%. मतलब कि आपके फाइनल एग्जाम में अगर आपने इंग्लिश में more than 75% मार्क्स लिए हैं तो आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं. सो ये थी आज की वीडियो. आई होप कि आपको पसंद आई होगी जो कि मैंने आपको प्रूफ के साथ ये इन्फॉर्मेशन दी है. इफ़ यू नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और इफ़ यू वांट टू रीड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन you can click on the link of the blog post and you can read this complete information step by step. So thumbs up if you love this video guys, and share this precious information with others as well. If you want video on any topic, you can comment down below, or you can follow me on Instagram for fast reply or any update. Thank you.